just revising fast for this arches of foot, and that's my last topic for 2024. Okay? Because, न्यू ईयर साल खत्म हो रहा हम लोग डर गए भाई है। And कभी केएम हॉस्पिटल जाओ तो वहां पे आपको ऐसे आर्चेस दिखते हैं। वो आर्चेस जेजे हॉस्पिटल जाओ 1845, ये आर्च का एंटीरियर एंड है, ये आर्च का पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड है। यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा पत्थर रहता है, उसको बोलते हैं समिट। समिट सेंटर स्टोन समिट। ओके, और ये आर्च का एंटीरियर पिलर है, एंटीरियर पिलर, और ये है पोस्टीरियर पिलर। So these are components of the arches. So what are the components of the arches? Anterior end, posterior end, then anterior pillar, posterior pillar, summit, and main joint. Main joint. I'm talking right now about the longitudinal arches. There are two arches, medial longitudinal and lateral longitudinal. Okay? So these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6 components of arches. Components of arches लिखना है तो 6 लिखना है। क्या है? Anterior end, posterior end, anterior pillar, posterior pillar and summit. ये बेटा ये दिख रहा है इधर का पार्ट। सर शाइन हो रहा है इसलिए नहीं दिख रहा, बट कवर हो रहा है। अच्छा, anterior end. अभी there are two arches, medial longitudinal arch and lateral longitudinal arch. Okay? Anterior end is formed by the head of the first metatarsal 1, 2, 3 for medial longitudinal arch, 4 and 5 for lateral longitudinal arch. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay? Posterior end is formed by the medial tubercle of the calcaneum for medial longitudinal arch and lateral tubercle of the calcaneum for lateral arch. Okay? So anterior end for medial longitudinal arch is by head of the metatarsal 1, 2, 3. For lateral longitudinal arch is head of metatarsal 4 and 5. Posterior end is by tubercle. इतना ही याद रखना है, tubercle. Medial tubercle of calcaneum for medial arch, lateral tubercle of calcaneum for lateral arch. Very good. Anterior pillar. तो मीडियल आर्च में जो है, देखो मैं इसके पहले पोस्टीरियर पिलर आपको बताता हूँ, सबसे इजी। पोस्टीरियर पिलर इज फॉर्म बाय मीडियल हाफ ऑफ कैल्केनियम फॉर मीडियल आर्च एंड लैटरल हाफ ऑफ कैल्केनियम फॉर द लैटरल लॉन्जिट्यूडनल आर्च। मतलब क्या है? पोस्टीरियर पिलर इज फॉर्म बाय कैल्केनियम. Medial half forms for the medial longitudinal arch and lateral forms for the lateral arch. अभी बचे कुचे जो bones हैं, they will form the anterior pillar. जैसे कि lateral में it will be cuboid, 4 and 5 metatarsal. इसमें metatarsal 1, 2, 3, उसके पहले navicular और medial, intermediate and lateral cuneiform. और टेलर्स भी
तो इसमें एंटीरियर पिलर में टैलस, टैलस के बाद आता है नेविकुलर, फिर मिडल इंटरमीडिएट लैटरल यूनिफॉर्म, फिर 1 2 3 मेटाटार्स। मीडियल आर्च का एंटीरियर पिलर। ओके, इज इट क्लियर? अभी समिट, समिट इज फॉर्म बाय द सुपीरियर by the talus, in lateral, superior and medial surface, basically of the talus, and here the summit is formed by the superior part of the calcaneus, superior part of the calcaneus, superior part of the talus, superior part of the calcaneus. Now talking about the last point, main joint, एक ही जॉइंट है दोनों में मेन, इसमें है टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, इसमें है कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। मीडियल आर्च का मेन जॉइंट कौन सा है? घुमरी। फर्स्ट नाम है तो अथर फर्स्ट नाम है रोहित, आज नाम गुरमे। हाँ, मेन जॉइंट क्या है मीडियल आर्च का? टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट। तुझं नाव काय? अभिजित। लॅटरल आर्चचा मेन जॉइंट कोणता है? कैल्केनियो क्यूबॉइड। बेसिकली लैटरल साइड पे क्यूबॉइड होता है, लैटरल साइड का एंटीरियर पिलर विल बी क्यूबॉइड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्स। पोस्टीरियर पिलर दोनों में मीडियल हाफ ऑफ कैल्केनियम, लैटरल हाफ ऑफ कैल्केनियम। मेन जॉइंट मीडियल साइड पे टैलो कैल्केनियो नेविकुलर का। तो ये हो गए कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स तभी लिखने पड़ते हैं जब इट कम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैक्टर्स मेंटेनिंग द आर्चेस आते हैं। ऑफ कोर्स ट्रांसवर्स आर्चेस मैंने आपको बताया नहीं, ट्रांसवर्स आर्चेस एंटीरियरली दो होते हैं और पोस्टीरियरली हाफ हाफ होते हैं। पोस्टीरियरली हाफ हाफ होते हैं, दोनों हाफ मिलके एक फुल हो जाता है। ओके, दोनों हाथ मिलके एक फुल हो जाता है। बचपन में कितने लोगों ने लकड़ी तोड़ के उसका धनुष्यबाण खुद से बनाया? बाकी लोगों ने प्लास्टिक वाला जो घर वालों ने लाते गया वो यूज किया। ओके, तो जब लकड़ी तोड़ के लाते थे और उसको रस्सी बांधते थे, रस्सी बांधते थे, that रस्सी is the tie beam which connects the two ends। क्या है? tie beam। रस्सी को क्या बोलते हैं? tie beam। So now here I am writing the tie beam for medial longitudinal arch, for lateral longitudinal arch, and for the transverse arch. I'm just finishing up. What is tie beam? Tie beam connects the two ends of the arch. Tie beam for the medial longitudinal arch and lateral longitudinal arch will be formed by plantar aponeurosis. Plantar aponeurosis. Plantar aponeurosis and muscles of the first layer, muscles of the first layer of sole, first layer of sole. बरोबर ना? ये ऐसा arches है, तो plantar aponeurosis runs like this, और first layer of muscles of the sole also runs like this, connecting posterior and anterior end, posterior and anterior end. बरोबर? So they form the tie beam for the longitudinal arch. Tie beam. What is tie beam? Connects the two ends, anterior posterior two ends. Because transverse में ऐसा tie beam रहेगा. Transverse का जो tie beam है वो ऐसा रहेगा. Two ends of the arch. तो उसमें क्या रहेगा? Muscle running horizontal. कौन है muscle running horizontal? Adductor
holosis, adductor holosis. कुछ लोग बोलते हैं the peroneus longest tendon which runs like this, it also acts as a pipe. Lateral side से घुस के medial side पे लो. आपके बुक में क्या दिया है टाइमिंग ट्रांसवर्स आर्च का? adductor holosis ना? adductor holosis. ओके. अभी देखो दूसरा, ये आर्च में इधर ऐसे ऐसे पत्थर रहेंगे, तो पत्थर के बीच में रहता है सीमेंट. ओके, सीमेंट रहता है, तभी वो पत्थर एक दूसरे को चिपकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेगमेंटल टाई. इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेगमेंटल टाई. सो दीज आर वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द आर्च, एक दूसरे से चिपक गए. Intersegmental ties. There was a time when GS Medical College में मैं इसका डेमो लेता था ना, मेरा पूरा बैच को लेके, when I was a batch teacher, 25 लोगों को लेके, I used to go and teach this topic on the ground floor in front of the dean office. तो देखो ये आर्च तो सारे आते जाते लोग देखते रहते थे क्या कर क्या रहे हैं. So I used to actually show them the arch. This is how the arch is. Grant Medical में भी मैं वैसे करता था. वहाँ तो actual उधर तो मैं उनको पुलिस स्टेशन के वहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग है, वहाँ पे लेके जाता था, और वहाँ पे वो बिल्डिंग डिलैपिलेटेड हो गया था. हाफकिन वहाँ पे रिसर्च करते थे, और वो आर्चेस को ऊपर से स्लिंग लगाया था. स्लिंग. So that is the sling, so that the arches remain stable. So coming from above is the sling, which maintains the arch. Okay. तो उसके पहले हम लोग एक सेकेंड कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? इंटरसेगमेंटल टाई. जो सीमेंट है, so that is formed by the ligaments here. Tallow, calcaneal, navicular ligament. क्या नाम लिगामेंट का नाम है? Tallow, calcaneal, navicular ligament. मीडियल साइड पे. लैटरल साइड पे शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट. शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट. शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट. मीडियल साइड पे इंटरसेगमेंटल टाई क्या है? सेकंड लास्ट बेंच. हाँ तू सेकंड लास्ट म्हणजे तूच ना, मागे कशाला बघतोस ना. मीडियल साइड पे इंटरसेगमेंटल टाई क्या है? टैलो, कैल्केनियो, नाविकुलर लिगामेंट. लैटरल साइड पे क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट. व्हाट इज इंटरसेगमेंटल टाई? कनेक्ट करता है वेरियस कंपोनेंट्स. अभी ट्रांसवर्स आर्च ऐसा है, तो इसमें इंट्रोशय एक कुछ कनेक्ट कर रहे हैं मेटाटार्सल्स को. So dorsal interossei, बस खाली dorsal interossei will form the intersegmental tie. उभा परत. पहिला कंपोनेंट काय होता फॅक्टर्स मेंटेनिंग द आर्चेस मध्ये? काय है? काय सब लोग जोर से बोलो. टाई बीम. What does tie beam do? Connects the two ends of the arch. Of course आपके बुक में फर्स्ट पार्ट लिखा है शेप ऑफ बोन, which is only important in transverse arches. वो आप लिख सकते हो. शेप ऑफ बोन्स. कुछ नहीं याद आया तो शेप ऑफ बोन्स. Okay, first shape of bones. Second is, what is second? Tie beam. Tie beam. What is tie beam? Connects the two ends of the arches. For medial longitudinal and lateral longitudinal arch, it is plantar aponeurosis and muscles of first leg. For lateral arch, it is adductor holosis. The second is intersegmental tie. मतलब ये अलग अलग जो bones है उधर के उनको कनेक्ट करने वाले ligaments या muscles. ट्रांसवर्स आर्च के लिए डॉर्सल और इंट्रोशैट बिकॉज़ वो कनेक्ट करते हैं मेटाटार्सल्स. और इसके लिए टैलो कैल्केनियो नाविकुलर मीडियल आर्च. तो मीडियल साइड पे ये बोन्स है, लैटरल पे शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट. ओके. थर्ड इज अ स्लिंग. स्लिंग ऊपर से आती है. तो
एक्चुअली मैंने स्लिंग्स देखा, ओल्ड बॉम्बे के बिल्डिंग को उन्होंने स्लिंग लगा के रखा था ताकि वो आर्च नीचे कोलैप्स ना हो. ओके, so sling is formed for medial longitudinal arch where tibialis, anterior tibialis, posterior, like the digitorum, like the pollicis longus. For the lateral arch by peroneus longer, by peroneus brevis. जो भी मीडियल साइड से नीचे जाते हैं, टॉम डिक एंड हैंड, मीडियल साइड से नीचे जाते हैं, वो पुल करेंगे ना, समिट को ऊपर पुल करेंगे, स्लिंग. और रिसेंटली, हाँ 2 मिनट सब पता लगा, नहीं लगा. और रिसेंटली दे हैव एडेड वन मोर थिंग एंड दैट इज सस्पेंशन. क्या है? सस्पेंशन. स्लिंग के साथ उन्होंने क्या नया कंपोनेंट ऐड किया है? सस्पेंशन. देयर इज ओनली वन सस्पेंशन. इसको हम लोग सस्पेंशन को पहले कॉमन स्लिंग बोलते थे. राइट साइड पे मेरा टिबियालिस एंटीरियर जाएगा और अटैच होगा मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्स. बरोबर? मीडियल क्यूनिफॉर्म बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्स. और लैटरल साइड से पेरोनियस लॉन्गस आता है, सोल में घुसता है और वो भी जाके अटैच होता है कहाँ पे? मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्स. सो अंडरस्टैंड हियर, suppose this is the foot. Tibialis anterior goes and gets attached to medial cuneiform and base of first metatarsal from the medial side. Peroneus longus also goes and gets attached to the same point. So this is peroneus longus, this is tibialis anterior. So दोनों मिलके एक common sling बनाते हैं. एक medial side से आता है, सेम स्पॉट पे इंसर्ट होता है, एक लैटरल साइड से आता है ऐसे. तो अगर देखोगे तो tibialis anterior, peroneus longus, they form a common sling which is nowadays called as suspension. So suspension is formed by कोपऱ्यातला मुलगा उभा राहा, formed by तुझ्या बाजूचा मुलगा. Common sling is what is formed by 2 muscles. What are they? तुझ्या बाजूचा मुलगा. बोल. पुढचा मुलगा. 2. Tibialis anterior. हे इथं लिहितोय ना, tibialis anterior. So this common sling is formed by tibialis anterior and peroneus longus. Medial side वरना कोणता येतो? Tibialis anterior. It gets inserted on medial cuneiform and base of first metatarsal. Lateral side से कौन सा मसल आता है? Peroneus longus. It also gets inserted on medial cuneiform. तो अगर एक medial side से आ रहा है, एक lateral से आ रहा है, दोनों एक जगह पे इंसर्ट हो रहे तो एक common sling फॉर्म कर रहे ना arches के लिए. You are getting it? So they form the common sling. Common sling is formed by tibialis and tibialis anterior and peroneus longus. Medial side पे कौन सा है? Lateral side पे peroneus. दोनों का इंसर्शन सेम पॉइंट पे, इसके लिए वो कॉमन स्लिंग है. ओके, the arches of foot, applied anatomy. No arches, pes planus. Pes planus, flat foot. Exaggerated arches, pes cavus. Pes cavus, वो ऐसा पैर रहेगा उसका. Pes cavus, pes planus, pes cavus. फिर क्या रहता है? Callipus equinus. जब लोग ऐसा चलते होते हैं ना तो Callipus equinus, Callipus calcaneus, जो चार्ली चैपलिन. So some people walk on the posterior part of the heel, some people walk on the toes. Callipus equinus, Callipus calcaneus. इतना 4 भी लिख लिया तो भी ठीक है. और एक पांचवा है क्लब फुट, Callipus equino. Callipus
इक्वाइनो वायरस, मतलब पोलियो में वगैरह लोगों के ऐसा रहता है, वो तो ऐसा करके होता है। हाँ, तो विद दैट आई स्टॉप हियर। क्या लिखोगे अप्लाइड एनाटॉमी में? कुछ नहीं याद आया। पेस प्लेनस, प्लेस केवस। पेस प्लेनस मतलब फ्लैटफुट, एग्जैगरेटेड आर्च, पेस केवस, केव के जैसा, पेस केवस। फिर कैलिपस इक्वाइनस, कैलिपस कैलकेनस, कैलिपस इक्वाइनस। पोल्ट्री बंद हो गए मेरे, रिकॉर्डिंग भी बंद कर